హైదరాబాద్ మారేట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో హుషార్ హైదరాబాద్ విత్ కేటీఆర్ పేరిట కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్య అతిథిగా తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో వ్యాపార వాణిజ్య వర్గాలు, భవన నిర్మాణ సంస్థల యజమానులు, పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. For anything, both on the social and economic front. While the elders are handling affairs of the state and politics, you work tirelessly to bring the change to the city of Hyderabad and bring the rest of the state up to the speed with the times, introducing them to entrepreneurship, encouraging small industries. My query, the testing times of COVID-19, the lockdown has created a standstill for business across all the sizes of establishments. You name it, what kind of support these business expect from the government, be it a small, medium and the large. Can you check the audio, please? Firstly, good afternoon to all of you, and I would like to thank VBN for giving us this opportunity, this forum, this podium to talk to all of you. Thank you very much. Thank you. To both Shiv and Kaushik, I think you go by MRD, is it? Yeah. MRD and Kaushik, thank you. Thank you for having me here, and thank you for the title. I really like it. Calling it Hushar Hyderabad is basically awakening the senses in every Hyderabad, every Hyderabadi, that you have to think before you get inked. So thank you very much for that as well. Going back to COVID, can I speak in Telugu if that's okay? Yes, please. Or do you want me to Here speak in we have English? a combination of North, South Indian business community. Okay, how many of you guys don't understand Telugu? Yeah, because I also have to speak to. कितने लोग हैं जो तेलुगु नहीं समझते हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं, तो मैं शायद इंग्लिश में और हिंदी में बात कर लूँ फिर. In fact, when COVID, came into our state in March, and then the lockdown, and subsequently, the shutdown of the entire city, and then followed by, the lull in business, which has affected the entire business community, and not only business community. In fact, if you think about it, आज कोविड ने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा. मतलब every government has been affected, every country has been affected, every individual has been affected, every institution has been affected, and every business has been affected at some level or another. So, as part of our efforts, we've done a few things which I think have helped, but I think there's still a lot more to be done. The few things that we've done, for example, Honorable Chief Minister announced yesterday, or in fact day before yesterday, that for the period, the lockdown period, for the 6 months, the previous 6 months that is, the power charges will be actual, demand charges and not, as they were in the past. So that's one of the things I think which offered a bit of a succor and a bit of relief for the business community. Secondly, we also have ensured, even during the lockdown, that any institution that had to run, like which had mission critical business activity like life sciences, like pharmaceuticals, etc., etc., they were also given all kinds of passes, and even the supply chain that kind of supplies, to the raw material or the finished goods, in terms of logistics, they were also given all kinds of logistical support by the government. Besides these two things, I think in the lockdown period, a basic subsistence package has been given to all the industrial workers. Everybody who's BPL, they have been supported. In fact, I am delighted that even the business houses had come together in a big way and have supported the state. A lot of people have contributed, in fact, to the Chief Minister's Relief Fund. In fact, business houses have come forward also and helped on their own. Several NGOs which have contributed in kind and in cash to the poorest of the poor. So on the whole, I think we fought this COVID as a humanity together, both governments, individuals, institutions, NGOs, etc. But the way forward, Government of India and state governments in the country, we have to start infusing money into economic activity. We have to start infusing money into creation of infrastructure. We have to pump in money to ensure that economic activity revives quickly. Only then, every single business, that is in the whole food chain, can start again, on the path of recovery. Now, what do I mean exactly?
You know, John F. Kennedy had said very famously at one point, he had said, America does not have good highways because it is rich. America is rich because it has good highways. The point I'm trying to make is, good infrastructure is the fundamental thing for furthering a country or a region's development or a state's development. Now, with the kind of medical infrastructure we have and how inadequate it is, after having been exposed across the world, not just in Telangana for that matter, every government, we have no choice but to start investing in healthcare infrastructure, in road infrastructure, especially after the floods in Hyderabad. We have no choice but to invest in our nalas, our lakes, our water bodies. So what this infrastructure investment will do, this capital expenditure will do is, that will spur further business activity, that will encourage our steel traders, that will encourage our cement companies, that will encourage our distributors, that will encourage our construction companies, that will encourage our agencies. So this role of a rupee is what ultimately economy is all about. And I think government is headed in that right direction now, the state government. And we are also working, of course, we're looking at what Government of India has to offer. They called it an Atmanirbhar package, 20 lakh crore stimulus. I don't know how many people have been helped by the 20 lakh crore package. I don't know if there are any people in this room who have received any help. किसी को मिला यहाँ पे 20 लाख करोड़ में से 2-4 लाख करोड़ किसी को मिला यहाँ पे? पता नहीं, मुझे तो कोई, अभी तक मैंने इस देश में तो किसी को नहीं देखा. बट एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उसमें बोलने में झिझकना नहीं चाहिए. एक बात तो जरूर कहूँगा कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही स्लो डाउन कभी का शुरू हो गया था. 8 क्वार्टर, एक नहीं दो नहीं, बल्कि 8 क्वार्टर का स्लो डाउन, 8 consecutive quarters of slowdown landed in the lockdown, which resulted in a recession today. So it is not like we did not know. It is not like a suddenly आ चुका है, कोरोना की वजह से सब खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है. 8 quarters have been affected because of 2 policies. One was demonetization, जिसने पूरा इंडिया को, जब इनिशियली किया गया था थोड़ा उसमें लोगों में कंफ्यूजन था, बट बाद में ऐसा लगा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो छोटे ट्रेडर हैं, जो स्मॉल और माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, they have been hit very, very badly. The growing economy has been hit, and today the results of that are seen in the slowdown, and eventually lockdown again hit it further. So therefore, my point is, as a state, we have done a few things, but I think a lot more need to be done, and we will certainly sit with the community. I'll take suggestions also on what needs to be done, and we'll certainly incorporate their ideas, their suggestions moving forward as well. Thank you. Thank you. Kaushik, over to you. So you're such a flamboyant and suave personality. I saw you addressing the IT fraternity on Sunday, and then you addressed the construction fraternity on Monday. This audience is predominantly businessmen who trade across all verticals. What is the safety assurance to the small trade community, especially with the emergence of kind of blue whales like Amazon and other, the Reliance entering online market, capturing traditional businesses like kirana, clothing? So what is your take on that? Kaushik, first things first. Why is Telangana today attracting business into the state? Matlab, how come Hyderabad has become a very attractive investment destination in the last 6 years more particularly? वो बोलने से पहले मुझे थोड़ा पास्ट के बारे में भी बात करना चाहिए. अगर आप पास्ट देखेंगे तो इस रूम में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपको शायद याद होगा 6 साल पहले जब तेलंगाना राज्य की गठन हुई थी, बहुत सारे शंकाएं थे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होगा हैदराबाद में. हैदराबाद में झगड़ा होगा क्या, आंध्रा तेलंगाना को लेकर झगड़ा होगा क्या, आंध्रा रायलसीमा को लेकर झगड़ा होगा क्या, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का माहौल क्या होगा. कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भाग जाएंगे यहाँ से. आपको शायद याद होगा, इस रूम में शायद कोई है या नहीं पता नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी 2013 में 14 में, ना सिर्फ यहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंदिरा पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे कि 2-2 दिन पावर हॉलिडे अगर आप देंगे एक हफ्ते में तो धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा. जनरेटर लगाना पड़ता था, हर घर में इन्वर्टर लगती थी. जेरोक्स सेंटर चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं करता. एक जूस स्टॉल चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं चलाता था. 2-2 दिन की पावर हॉलिडे. इंदिरा पार्क के पास जब हड़ताल किया था आपने, तो उसमें यह भी कहा आपने कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो पावर टैरिफ बढ़ा दो.
₹6 नहीं 10 रुपया कर दो, बट पावर तो दे दो ठीक ठाक, तो हम लोग कम से कम हमारा धंधा चलाएं और हम पे जो लोग निर्भर हैं, जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको कम से कम रोजी रोटी खाने का मौका मिले। मैं आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूं कि हम लोग जब सत्ता में आए 2014 में, इनिशियल डेज में काचीगुड़ा में एक मीटिंग किया था हमने। रवि प्रसाद जी यहीं पे कहीं पे है, उन्होंने किया था, रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने काचीगुड़ा में। हमारे स्टील ट्रेडर्स थे, हमारे भाई लोग, देखिए वहां पे से भी हाथ उठ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे भी शायद हैं, आप भी थे। आपने उस दिन एक ही डिमांड किया था मुझसे, आपने शायद 2 डिमांड किया था। एक तो आपने ये कहा था कि भाई हमें कुछ भी करो बिजली दो, कुछ भी करो, तुम लोग क्या करोगे पता नहीं, बिजली दे दो। और दूसरी बात आपने कहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि झंझट ना हो। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, 6 साल हो गया, हमने 2 चीजों पे डिलीवर किया कि नहीं, आप एक बार याद करो। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने लाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने काफी खूब इनफैक्ट रिवाइव किया। इससे और भी अहम, इससे भी अहम चीज यह है कि पहले ही 6 महीनों में हमने पावर का सिचुएशन को स्टेबल करवा दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर एक बिजनेस चलाना है, एक धंधा चलाना है, सबसे अहम बात है स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। उसका अगर वो माहौल, शांति की माहौल, अमन की जो माहौल है, उसमें अगर तब्दील होती है, उसमें कोई चेंज होती है, तो जरूर एवरीबडी विल बी इफेक्टेड, ना सिर्फ नॉर्मल हैदराबादी। क्योंकि मैं जब बचपन में हैदराबाद में ही, मेरी पैदाइश हैदराबाद की नहीं है, मैं करीमनगर में, आई वॉज बॉर्न इन करीमनगर, बट आई वॉज ब्रॉट अप इन हैदराबाद। आई वेंट टू स्कूल, ग्रामर स्कूल, मेरे कुछ यहाँ क्लासमेट भी बैठे हुए हैं, ग्रामर स्कूल हैबिट्स में मैं यहाँ पे पढ़ाई किया मैंने। तो तभी मैं देखता था हर साल हमें, आपको शायद याद होगा इसमें काफी सारे लोगों को, हर साल जब हम स्कूल में थे, हर साल कम से कम 7 से 10 दिन कर्फ्यू लगता था, हर साल विदाउट ए फेल। पक्का पूरा व्यापार बंद, पूरा सिटी बंद, कहां कब कर्फ्यू लगी, कितने बजे से कितने बजे तक, यही बात होती थी। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, उससे कितना डिस्टर्बेंस हुआ था याद कीजिए, उससे कितना तकलीफ हुआ था याद कीजिए। आज हैदराबाद में पिछले 6 सालों से वैसी कोई नौबत नहीं है। इसीलिए मैं आप तमाम हमारे भाई लोग से विनती करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम चीज है। अगर बिजनेस चलना है, स्टेट चलना है, रोल ऑफ रूपी चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो कोई भी नाम से लेके, चाहे वो कास्ट लाइन पे हो, क्रीड लाइन्स पे हो, रिलीजियस लाइन्स पे हो, अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं 2 चीज आपने जो पूछा था हमने डिलीवर किया। शांति के साथ यहाँ पे हमने व्यवहार किया, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया हमने, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी को हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और इससे भी बढ़िया बात, पिछले 6 सालों में यहाँ कोई हरासमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किसी को नहीं हुआ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी, कोई जुल्म कहीं नहीं, कोई आपके धंधे में कोई पॉलिटिशियन का दखलंदाजी, इन डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक चल रहा है यहाँ पे। तो ये 3 चीज आपने जो पूछा था मुझे 2014 में, मैं मानता हूं और भी करना चाहिए, मैं मानता हूं और भी कर सकते हैं, बट उसके लिए शांति बहुत जरूरी है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत अहम है। ये मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं। So you're such a versatile speaker in English and Hindi too. ఇక్కడ తెలుగు I'm a తమ్ముళ్ళు కూడా Hyderabadi boy. మీరు తెలుగులో కూడా మాట్లాడితే మా అన్న మాట్లాడిండ్రా అని చెప్పుకోవడానికి వెయిట్ No, I'm a Hyderabadi, so I can speak in all languages. मैं दक्कनी उर्दू बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, తెలుగు बोलता हूँ, తెలుగులో కూడా కొంచెం మాట్లాడండి వినపం సార్. తెలుగులో కూడా మాట్లాడాలంటే మరి మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, అందుకే I'm switching to हिंदी. हिंदी तो सभी समझते हैं, हैदराबादी हर कोई हिंदी समझता है, बट एक चीज बोलना चाहिए कौशिक, जब मैं स्कूल में था ना, जो हैदराबादी अगर पहली बार मिलते थे तो लोग हमेशा शुरुआत उनकी हिंदी में या उर्दू में होती थी। आजकल तेलुगु में बोल रहे हैं, बट इससे पहले हमेशा हिंदी या उर्दू में शुरुआत होती थी। That's the fact. There can be no better example of setting a goal of yourself and getting it done. Here, one of the reasons why Mr. K.T. Ramarao is an inspiration to many. One is you're tireless. You are constantly on the move, constantly planning the next big breakthrough for the state of Telangana. For the first time in many years, as told by भाई इवेंट का नाम रखे हुशार हैदराबाद, यहाँ पे ईरानी चाय नहीं पिला रहे आप, ग्रीन टी पिला रहे, क्या तो भी है नहीं। excuse me. मैरियट में नहीं मिलेगा शायद ईरानी चाय।
नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, अरे यार तू छोड़ ना। पियेंगे ना, अच्छा रहता है। मैं भी कॉफी मंगा लिया। भाई ईरानी चाय मिलेगा मैरियट में, देखो यार, ट्राई सही है। चलो। For the first time in many years, as told by our elders, you are a leader whose works is clearly apparent in the. भाई चढ़ाओ मत, सुनो। नहीं नहीं, ऐसे बात Question बोल रहा पूछो, चढ़ाओ नहीं, मत, नहीं, झाड़ पे आपको- चढ़ा रहा हूँ मेरे अभी चने को देखो, झाड़ पे। आपको कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। You are like a hero for the Telangana. But I got a question here. Development in the national scenario has always inclined towards north. South is always given a least. Likewise, in Hyderabad, the development trend over the years have been towards the west of Hyderabad. Why not east? Especially in terms of IT. Is there any different side of the Hyderabad that we can look forward for development? Absolutely. In fact, I will tell you one thing कि हैदराबाद अगर all round development नहीं होता है, it will be a grave injustice to all of our children and all of our future generations. मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, अगर शॉपिंग करने के लिए कहीं जाना होता, अगर बाटा जूते खरीदने होते तो हैबिट्स में ही मिलते, आपको कहीं और नहीं मिलते। एक ही जगह था, वो चिराग अली लेन, वो हैबिट्स वाला मेन रोड, वही चेरमास, वही वेयर हाउस, वही जॉन्स बेकरी, वहीं पे पूरा धंधा चलता था, एक हैबिट से लेकर कोटी तक। हाँ जी। पूरा हैदराबाद में और कहीं शॉपिंग नहीं था। पर आज आप देखो, हैदराबाद में चौ तरफ आपको हर जगह आपके पास शॉपिंग है। अगर आप कुत्तापेट भी जाते हो, हमारे दयानंद साहब वहीं से आर के पुरम से, वहाँ पे भी आज खूब सारे शॉपिंग है। आप वहाँ चले गए एलबी नगर, और वहाँ पे भी शॉपिंग है। दिलसुख नगर शॉपिंग है, यहाँ पे कुकटपल्ली आ जाओ शॉपिंग है, हैदर नगर है, पटानचरू तक है। अगर इधर चले जाओ तो उप्पल, एएस राव नगर, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज इंप्रूव्ड। बाय एंड लार्ज बिजनेस टुडे इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया। कोर सिटी जो एमसीएच थी, जिसमें जो हमारे पुराने बेगम बाजार, चिराग अली लेन, कोटी, ट्रू बाजार, जितने भी हमारे व्यापारी थे वहीं पे थे, आज वहीं तक सीमित नहीं है। आज हैदराबाद पूरा बिजनेस तो हर जगह फैला हुआ है। उसके बाद आफ्टर दैट इफ यू लुक एट इट, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स व्हिच हैव प्रेफर्ड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी। फॉर एग्जांपल आईटी का आपने जिक्र किया, तो आईटी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट में है। उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए फिलहाल मतलब हाल ही में हमने एक पॉलिसी लाया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है ग्रिड, ग्रोथ इन डिस्पर्शन। ग्रोथ इन डिस्पर्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये चाहते हैं कि आईटी ना सिर्फ वेस्टर्न पार्ट तक सीमित हो जाए, बल्कि वो पूरा हैदराबाद में फैल जाए, मतलब नॉर्थ में भी, साउथ में भी और ईस्ट में भी। और इसके लिए हम लोग एडिशनल इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर आप उप्पल में, जैसा अभी उप्पल में हमने 5 आईटी पार्क लॉन्च किया, उप्पल में एक शिल्पारामम भी हमने बनाया, मेट्रो भी वहां तक हमने बना दिया। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जब मेट्रो वहां तक बनती है तो जरूर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था जब मिलेगी तो जरूर वहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो मेरी तो उम्मीद यह है, यकीन ये है कि जरूर हैदराबाद में ईस्टर्न पार्ट में आप आगे आने वाले 1-2 साल में आप आईटी पार्क देखेंगे। मैं कोम्पल्ली में भी एक आईटी पार्क इनॉग्रेट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे भी एक आईटी पार्क बना रहे हैं। और जो सदर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद है, जो हमारे पहाड़ी शरीफ के पीछे वाली इलाका जो है, एयरपोर्ट की तरफ जो है, वहां पे भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो अमेजॉन आया था, अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो वहीं पे लगा रहा है पैसा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वी आर कमिटेड टू 2 थिंग्स। वी आर कमिटेड टू डीकंजेस्टिंग द सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके लिए 2 चीज करना जरूरी है, एक तो डिस्पर्शन में ग्रोथ होना चाहिए, और दूसरा हम लोग एक नया पॉलिसी भी लाए हैं। इसमें अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमने एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी हमने लाया, जिसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। क्या है इंटीग्रेटेड टाउनशिप? इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब यह है कि अगर आप कोई टाउनशिप बना रहे हो तो उसमें लिव, वर्क, लर्न, प्ले, इस सारे चीजों का सुविधा होना चाहिए। एक टाउनशिप सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पूरा आउटर रिंग रोड के चारों तरफ। तो आउटर रिंग रोड के 5 किलोमीटर बाहर अगर आप टाउनशिप अगर बनाओगे, तो anybody who can't afford a villa or a flat in Hyderabad, they can go there and live there, and they can commute either inside the township, or if they have to commute into Hyderabad also, they can come and go. So idea is to decongest the core city, create counter magnets around ORR, so that this core city is decongested and people also have better quality of living. So these are the 2 things I am very confident about, which will improve, the growth all around Hyderabad. And if you look at life sciences also,
आज हैदराबाद पूरा दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है। आज हम लोग कोरोना के टाइम पे हैं, बहुत सारे लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे वैक्सीन के बारे में। आज शायद पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे पता है, हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है। पूरा दुनिया में जितना वैक्सीन बनता है उसमें से 1/3 हमारे ही यहाँ बनता है। अगर आज दुनिया में कहीं भी एक बच्चा अगर उसको वैक्सीन शॉट दिया जा रहा है, उसमें 1/3 चांस है, 33% चांस है कि वो हैदराबाद में बना हुआ होगा। सो इतना मतलब चुस्ती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन और बायोलॉजिकल बायोटेक एरिया में भी और फार्मास्यूटिकल्स में भी। लाइफ साइंसेस, आईटी और एरोस्पेस इन इंडस्ट्री, आई सी ए ग्रेट फ्यूचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद, इन एंड अराउंड हैदराबाद। और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो है, बट दीज 4 थिंग्स आई एम वेरी अपबीट अबाउट। कुछ नहीं बोला उन्होंने, हंसा। नेक्स्ट डे ऑल्सो आई कॉट हिम अगेन। आई सेड, हाउ डू यू कीप योर सिटी क्लीन? यू नो व्हाट ही सेड? ही स्माइल्ड. He said, sir, we don't dirty it in the first place. Common sense. Ante, there are so many learnings from each place you visit. There's so many good things that you see. For example, this cleanliness. Everybody talks about it, but what we forget is that it's ultimately our responsibility as citizens not to litter, not to dirty our place. हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट जब से बनी, I should tell you, హైదరాబాద్ లో 3500 టన్నుల చెత్త మాత్రమే కలెక్ట్ అయ్యేది 2014లో పర్ డే. ఈరోజు 6000 టన్నుల చెత్తను మనం పికప్ చేస్తున్నాం. ఇది జనాలు పెరగడం వల్ల చెత్త పెరగలేదు, ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. జనాలు కూడా పెరిగారు కానీ ఎఫిషియన్సీ బాగా పెరిగింది. స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లు వచ్చాయి 2500. ఆ తర్వాత ఈరోజు చెత్త కలెక్షన్ బాగా చేసుకున్నాం. దాన్ని ఆ డొక్కు బండ్ల మీద తీసుకొని పోతూ ఉంటాం మనం. డడ్డని పోతుంటే దాని వెనకాల 2 బిన్స్ ఉంటాయి. దాని వెనకాల బండి మీద పోతుంటే అది ఎక్కడ పడుతుందో మన మీద భయం అవుతుంటుంది. ఆ బండ్లన్నీ తీసేసి ఇప్పుడు ఒక 55 కొత్త రెఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ పెట్టాం. అంటే చాలా సైంటిఫిక్ రెఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ పెట్టాం. చెత్తను జవహర్ నగర్ తీసుకొని పోతాము. తీసుకొని పోయి అక్కడ 2గా చేస్తాము, తడి చెత్త, పొడి చెత్త. అక్కడ తడి చెత్త నుంచి వీఆర్ జనరేటింగ్ మాన్యూర్, ఎరువు రైతులకు ఇస్తున్నాం. పొడి చెత్త నుంచి ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ సౌత్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్, 20 మెగావాట్ ప్లాంట్, ఇండియాస్ సెకండ్ ప్లాంట్. అక్కడ డ్రై వేస్ట్ నుంచి ఎనర్జీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఒక్క జవహర్ నగర్ ఒకటే సరిపోదు, అందుకే ఇంకా 2 డంప్ యార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నాం. అక్కడ కూడా లక్కడారంలో, ప్యారీనగర్లో అక్కడ కూడా పెట్టబోతున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లెర్నింగ్స్ వెన్ యూ విజిట్ అ ప్లేస్, యూ పికప్, యూ బ్రింగ్ దెమ్, అబ్జార్బ్ సమ్. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ కాన్ఫిడెంట్లీ, అ సిటీ విత్ మోర్ దెన్ ఎనీ సిటీ ఇన్ ఇండియా, మీరు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ ర్యాంకింగ్స్ చూడండి, 40 lakh plus సిటిజన్స్ ఉండే అన్ని సిటీస్లో వీఆర్ నంబర్ 1 हैदराबाद. आई एम नॉट सेइंग वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और बेस्ट इन द कंट्री. इंडोर अपने से अच्छा है, बाकी लोग अपने से अच्छा है, मैं जानता हूँ. बट 40 लाख प्लस पॉपुलेशन में अगर देखेंगे, हम लोग बम्बई से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, चेन्नई से, कोलकाता से हम लोग बेहतर है. इस हद तक तो मैं बोल सकता हूँ. बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. थैंक यू. Excuse me, Yes, sir. please. Sir, Hi. This is PV Kuldeep. By profession, I'm an architect and a valuer. First of all, I would like to congratulate you for bringing unprecedented reforms in case of land as a subject. This, I would say, if this survey is done after the Britishers, this would be the first time that a survey would be done and digitized and put for everybody's usage so that many legal issues and many problems get sorted off. And other states will surely follow. This is a benchmark that you're establishing. Now, in case of investments and all, there is one thing which I would like to put across out here, that many people are facing problems regarding this urban land ceiling. This act has been repealed in 2008, but still there are implications because of 1 or 2 illegal issues. The collector offices and all those people, they block across the whole place and they don't issue any kind of permits. There are many places in Hyderabad and in the surrounding areas. If this problem is resolved, then this will usher a huge economic activity which would be absolutely unprecedented, and revenue generation would be at the paramount maximum level. So if this is resolved, many people have put up LRS. What's your name, brother? What's your name? PV Kuldeep. Kuldeep. Yeah. Kuldeep, it's a great question. In fact, కొద్దిగా డీటెయిల్గా చెప్పాలి, చెప్తాను. హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అంశాలు అట్లాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంటే, మొన్నటి నుంచి మేము ఈ ధరణి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వీ బీన్ కలెక్టింగ్ డేటా. యుఎల్సీ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, మీరు చెప్పినట్టు నోటరైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. వాటితో పాటు చాలా ఏరియాస్లో, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఉప్పల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జోన్ ఏమో ఇండస్ట్రియల్ జోన్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దానివల్ల, జిహెచ్ఎంసీ వాడేమో
కట్టినప్పుడు ఏమేం చేయలేదు, ఇప్పుడేమో దానికి పర్మిషన్ లేదు, లీగల్ డాక్యుమెంట్ లేదు, ఏమీ లేదు. అమ్ముకుందామన్నా, పిల్లలకి ఇద్దామన్నా, లేకపోతే బ్యాంకులో పెట్టి లోన్ తెచ్చుకుందామన్నా అది పనికి రాకుండా ఉంది. అందుకే మొన్న ఏం చేశామంటే ఉప్పల్ ఏరియా మొత్తంలో జోన్ కన్వర్షన్స్ అన్నీ కూడా చేసి అక్కడ వాళ్ళందరినీ రెసిడెన్షియల్ జోన్ కింద మార్చాం. కానీ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మొత్తం ఇందాక నేను చెప్తూ సగం వచ్చి ఆగిపోయాను. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చూస్తే మా ఇనీషియల్ అంచనా వాజ్ 60 లక్షల ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్, అంటే ఇల్లు, స్ట్రక్చరు, నాన్ అగ్రికల్చర్, నాలా కన్వర్షన్ అయి ఉంది. నాలా కన్వర్షన్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. చేయడం వల్ల అది అంతా కూడా స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణకి మనకు ఊర్లో ఇల్లు ఉంది అనుకోండి, ఆదిలాబాద్లో ఏదో మండలంలో ఎక్కడ ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇల్లుని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ధరణిలో పెట్టడం వల్ల దాన్ని రేపు మీరు కావాలంటే బ్యాంక్కి పోతే లోన్ వస్తుంది. యూఆర్ అన్లాకింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ, యూఆర్ లెవరేజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ హియర్. హైదరాబాద్లో చాలా ప్రాపర్టీస్, చాలా కాలనీస్ ఇట్లాంటి సమస్యలు, భూ సమస్యల వల్ల, ఇప్పుడు ఎల్బీ నగర్ ఏరియా ఉంది, ఆ బిఎన్ రెడ్డి నగరం ఒక ఏరియా ఉంటుంది, అక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. అక్కడ చాలా కాలనీస్లో ఉన్నాయి, ఒక 14-15 కాలనీస్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చే హామీ ఏంటంటే మీ భూ సమస్యలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఒక 4-5 లక్షల ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి. ఇవన్నింటినీ కూడా డెఫినెట్గా ఏ రకమైన ల్యాండ్ అయినా కావచ్చు, యూఎల్సీ కావచ్చు, ఇంకేదైనా రకమైన ల్యాండ్ కావచ్చు, డెఫినెట్గా వాటన్నిటిని కూడా సాల్వ్ చేసి మీ ప్రాపర్టీ, మీ స్థిరాస్తి మీద మీకు హక్కు కల్పించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వానికి. దీనికి నేను పర్సనల్గా బాధ్యత తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ హౌ యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ కుల్దీప్. దట్ ఈస్ హౌ యూ లెవరేజ్, దట్ ఈస్ హౌ యూ అన్లాక్ economic value and activity. Now what that is the goal. More than 5 lakh CC cameras. You know, we are the city with the most number of CC cameras in the country. In fact, इस देश में जितने भी CC कैमरा हैं, उसमें से 65%, 65% are in Hyderabad. So the reason why we have done this is because सबसे अहम चीज, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होना है, जॉब क्रिएशन होना है, सिटी को चलाना है, सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, यहाँ पे रोजगार चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लॉ एंड ऑर्डर. उसमें हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इस केसीआर साहब का गवर्नमेंट आने के बाद आपने देखा होगा, उससे पहले वो कटोरा गाड़ी था पुलिस का, वो पुराने जीप थे, तो सारे जीपों को हटा दिया हमने, नए गाड़ी, चमकते हुए इनोवा आ गए गाड़ी रोड पे. आपके इंटरसेप्टर गाड़ी आज जो दिखते हैं चौरस्ते पे, वो भी केसीआर साहब का आइडिया था. उसके बाद अगर आप बंजारा हिल्स में अगर आप जाते हो कभी, वो रोड नंबर 12 पे आप देखोगे एक शानदार इमारत, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कमांड कंट्रोल सेंटर. किसी ने देखा नहीं, पता नहीं, अभी आप लोग भी यहाँ दिखा रहे थे, एक बार वो भी दिखा दो. तो वो भी आज बन रहा है, वो 2 महीने दूर है, उगादी के टाइम पे वो भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि वी वांट टू डबल द नंबर ऑफ सीसी कैमरास फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख, एंड वी वांट टू एंश्योर दैट अगर कोई चेन स्नैचिंग होता है, कोई हरासमेंट होता है, कुछ भी होता है, वी आर एबल टू कैप्चर दैट इमीडिएटली एंड वी आर एबल टू एंश्योर दैट crime is either deterred, either prevented, or even when it happens, if it happens, we should be able to immediately solve it. And the third thing I'd like to point out is, even women's safety is a very, very important subject. So KCR Saab's idea was, She Teams was his idea, his brainchild. In fact, he came out with She Teams, and today our women feel safer here, our businesses feel safer here, our citizens feel safer. Chain snatchings कम हो गया, crime कम हो गया, कोई रिलीजन के नाम पे डिस्टर्बेंस नहीं. जैसा मैंने कहा, ना ओल्ड सिटी में ना न्यू सिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. आज कम्युनल हार्मनी भी बहुत मजबूत है. तो आई बिलीव दैट इज द फंडामेंटल थिंग दैट गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन एंड विल स्ट्रेंथन इट इवन फर्दर. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन दिस रूम इज, प्लीज थिंक, बिकॉज व्हेन यू आर वोटिंग, यू ऑट टू बी थिंकिंग अबाउट क्या चाहिए हमें, कैसी गवर्नमेंट चाहिए हमें. एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एक डिसाइसिव पॉलिसीज लाने वाली गवर्नमेंट चाहिए कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले पार्टीज चाहिए. ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीजों का इंपैक्ट आप ही पे पड़ता है, आपके बिजनेस पे पड़ता है. अगर डिस्टर्बेंस होती है, सबसे पहले इफेक्ट होने वाले बिजनेसमैन हैं, बिजनेसेस हैं, और आप पे जो लोग डिपेंडेंट है वो लोग इफेक्ट होते हैं.